known as Phungwang, made landfall on the eastern coastline of the Philippines. The storm struck with terrifying force, bringing sustained winds of around 185 kilometers per hour and gusts reaching up to 230. Heavy rains drenched much of the island of Luzon as the storm pushed inland from the Pacific Ocean. The Eye of Uwan crossed the coastal province of Aurora before sweeping across Catanduanes, Camarines Sur, and other central regions. The country's Weather Bureau placed several provinces under the highest alert level, warning of life-threatening winds, flash floods, and storm surges powerful enough to engulf entire coastal communities. Ahead of the typhoon's arrival, the Philippine government launched one of its largest preemptive evacuation efforts in recent years. More than 900,000 people were ordered to leave their homes and seek shelter in schools, gymnasiums, and churches designated as emergency centers. Military units and disaster response teams were deployed across the affected regions, preparing for rescue operations once the storm subsided. Hundreds of domestic and international flights were canceled as airports across Luzon suspended operations. Public transportation ground to a halt, and major highways were blocked by early flooding and fallen trees, isolating many rural towns even before the worst of the storm arrived. As the typhoon roared across the eastern provinces, reports of widespread destruction began to pour in. Winds ripped the roofs off houses, uprooted trees, and knocked down power lines, leaving entire neighborhoods in darkness. Along the coastal areas, massive waves surged inland, destroying fishing boats and wooden homes built near the water. Floodwaters quickly rose to waist and even chest height in some areas. In mountain regions, the combination of relentless rain and saturated soil triggered landslides, cutting off access to remote communities. Residents described the sound of the storm as a constant roar, like an endless freight train crashing through their villages. Grabe! Across central and northern Luzon, millions of people were left without electricity. The blackout extended from the Bicol region up to parts of Isabela and Cagayan. Communication towers were damaged, making it difficult for authorities to reach isolated areas and assess the full extent of the damage. Emergency responders faced enormous challenges as fallen debris and floods blocked roads, forcing them to rely on boats and military trucks to deliver relief supplies. Officials warned that recovery operations could take weeks, especially in rural towns where infrastructure was already fragile. President Ferdinand Marcos Jr. addressed the nation, urging calm and cooperation. He emphasized that the government's priority was to protect lives, not property, and asked citizens to follow evacuation orders without hesitation. Rescue units from the armed forces and police were placed on standby to support local governments, while humanitarian agencies began distributing food, water, and medical aid. Despite these efforts, officials admitted that access to many of the hardest hit villages remained extremely difficult due to the strength of the winds and the volume of debris scattered. The humanitarian situation was further complicated by the fact that the country was still recovering from Typhoon Kalmegi, which struck only weeks earlier and left more than 200 people dead. Many communities had not yet fully rebuilt their homes when Uwan arrived, compounding the suffering of thousands of families. Relief organizations expressed concern that temporary shelters could become overcrowded, raising the risk of illness among evacuees. In low-lying areas, emergency workers warned of possible water contamination and shortages of clean drinking water. Scenes of devastation unfolded across the nation. In Catanduanes, residents filmed enormous waves crashing through seawalls and sweeping away homes,
In Camarines Norte, rescue teams waded through flooded streets to reach trapped villagers. In Aurora, the province first struck by the storm, entire neighborhoods were flattened, with corrugated metal roofs twisted into heaps of debris. In the capital city of Manila, heavy rain and strong winds toppled trees and billboards, causing power outages and traffic chaos, though the city was spared the storm's most violent winds. As the typhoon continued its westward track, forecasters warned that the danger was far from over. Even after the eye of Uwan moved past Luzon, the storm's outer rain bands continued to dump heavy rainfall across wide areas, raising the threat of flash floods and landslides. Meteorologists predicted that the typhoon would weaken slightly as it crossed into the South China Sea, but would still remain a powerful system capable of causing additional flooding in western provinces. Authorities urged the public to remain alert for after effects, reminding citizens that many fatalities occur, not during the landfall itself, but in the days that follow, when rivers overflow and unstable hillsides collapse. Uwan's rapid intensification over the Philippine Sea raised new alarms among scientists studying extreme weather patterns. Experts noted that unusually warm ocean temperatures helped fuel the storm's explosive growth, a phenomenon consistent with global climate change trends. The Philippines, which experiences more than 20 tropical storms each year, remains one of the world's most vulnerable nations to climate-related disasters. Each new storm underscores the urgent need for stronger infrastructure, better urban planning, and international cooperation on climate resilience. नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर देखें। 10 नवंबर के दिन देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर तमाम भागों पर उत्तर पश्चिमी और ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 11 नवंबर के दिन देखिए उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं जैसे कि ललितपुर से लेकर झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और यह कानपुर नगर, कानपुर देहात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, इन सभी जिलों में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा के भागों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। 12 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 12 नवंबर के दिन भी पहाड़ी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ का लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी कोई सक्रिय और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। नेपाल से सटे हुए भागों पर भी 12 नवंबर के दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सभी जिलों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा।
और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन सभी जिलों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 13 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। 13 नवंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों मौसम बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में बना हुआ है। कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है और ना ही कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, इन सभी भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। तो देखा जाए तो दोस्तों मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और ये कानपुर नगर के भागों पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है दोस्तों 13 नवंबर के दिन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।